Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Urban Livelihood in Civics. And in this chapter, we have discussed about different types of urban livelihood. And the chapter is about two the story of two cousins. Two cousins are moving in the city. They are visiting in the city, and they are seeing different types of urban livelihood. Like first of all, they saw the people who are working on the street, like vendors and hawkers. Then their temporary shops are there, and the story of rickshaw puller was also there, Bachchu Manji. And then they both of them reached the market. In the market, we see there are permanent shops, uh, mm, uh, and in these permanent shops, different types of shops are there, like shops which sells clothes, toys, utensils, etc. And in that market area, there is a dentist also, with whom they have an appointment. And then after meeting the dentist, they reached a showroom, because now they have to purchase something from this showroom. And we saw that this is a very big showroom, three-story showroom, and the owners are Vandana and Harpreet. And we have seen that Harpreet is telling the story that earlier this showroom, it used to be a small shop, and it was run by her father and uncle. And after completing her education, she was doing fashion designing, dress designing, isn't it? She was doing dress designing course, and after completing her course, she joined her family business. Okay, and now we will proceed further. Vandana, Harpreet and Vandana, business persons. They are the business persons. Okay, so we opened this showroom some years ago. I am a dress designer. It is told by Harpreet. Harpreet is saying all these things. Our business has changed. These days, people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. So now Vandana is saying this is the business has changed a lot with the time. टाइम के साथ साथ लोगों के जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो चेंज हो गए. Earlier, people used to purchase loose clothes from the shops, and then they get them stitched from the tailor. That was the trend in earlier time. But nowadays, people prefer to purchase ready-made garments. Everyone wants to purchase ready-made garments. So they have also changed according to the taste of the people, according to the need of the people. Now they sell ready-made garments, and with ready-made garments, what is important nowadays is display. है ना, जो चीज़ें हमें सामने दिखनी चाहिए. Whatever there in the shop, जो भी उनके पास है, for the purpose of purchase, for the purpose of selling, whatever they have, it should be displayed. है ना, तो display is very important. That is why nowadays there are such a big showrooms. In order to display the items, in order to display the ready-made garments, they need space. In the absence of a space, in the small space, they cannot display, and display is very important nowadays. So everything has changed. Okay. For our showroom, we buy things from different places. So this is the showroom of ready-made garments. So they purchase these ready-made garments from different places.
We buy most of the materials from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, and Tripura. So these are the places from where they purchase their garments. Mumbai, Ludhiana, then Ahmedabad, and Tripura. Okay. Some materials also come from Noida and Gurgaon. नोएडा एंड गुड़गांव से भी कुछ मटेरियल्स वो परचेज करते हैं. ओके. We get some dress items from foreign countries also, not only from India, but they get some dress items from abroad also. बाहर से भी, दूसरे देशों से भी ये सामान लेते हैं. Okay. So there are several things we need to do to run this showroom properly. Now they have a big responsibility क्योंकि showroom is such a big showroom. अब इसको रन करने के लिए उनको बहुत सारे काम करने होंगे, बिकॉज अगर इतने बड़े शोरूम के लिए क्या होगा कि they have invested a lot for this showroom, और उसको रन करने में भी उनको बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं. तो what they need profit, है ना. जब उनको अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगी, उनकी सेलिंग अगर ज़्यादा नहीं होगी, तो they will go in loss, and that will have a very bad impact on their business as well as life. तो उनको ये बहुत important है कि ये शोरूम उनका बढ़िया से चले. And in order to run it properly, they have to do so many things. What are the things they do in order to run it properly? These things are, look at this. We advertise in various newspapers, cinema theaters, television, and radio channels. So for the purpose of selling, what is the requirement? The first requirement is advertisement. People must know that there is a showroom in their city and which sells so much what type of garments. तो इसका advertisement बहुत important होता है, because एडवर्टीजमेंट से हमें पता चलती है. तो कहाँ पर एडवर्टीजमेंट हो रही है इसकी एडवर्टीजमेंट वो न्यूज़पेपर में करते हैं. You must be seeing in newspaper there is advertisement of various malls and showrooms. जो भी बहुत बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, चेन शॉप होते हैं, उनकी कई बार हम अपने न्यूज़पेपर में उनका एडवर्टीजमेंट देखते हैं. तो इन द सिमिलर वे, Vandana and Harpreet, they are also advertising about their showroom in the newspaper. Then they are also advertising in cinema theater, television, radio channels. So these are the means: newspaper, cinema theater, then radio, television. These are the means through which we advertise. किसी भी चीज़ को अगर हम एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो कैसे बताएंगे? न्यूज़पेपर के थ्रू बताएंगे, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, देन सिनेमा थिएटर भी. जब भी हम किसी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जब उसमें इंटरवल होता है, तो एट दैट टाइम वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना. तो ये एडवर्टीजमेंट का क्या पर्पस होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट? द पर्पस इज टू मेक पीपल प्रिपेयर. लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो हमारे जगह से ये सामान करते हैं, हमारी ये सारी क्वालिटीज़ हैं, अपने बारे में अच्छी चीज़ें वो बताते हैं, है ना. अपने बारे में बढ़िया बातें बता करके वो लोगों के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि अब जब भी उनको रेडीमेड गारमेंट्स खरीदना हो, तो वो अपना उस एडवर्टीजमेंट को याद रखेंगे और वो वंदना और हरप्रीत के शोरूम में ही आएंगे in order to purchase the garments. Okay. So first thing they have to do is to advertise. Okay. And currently this building is rented, but soon we plan to buy it. So at present the showroom is a big showroom. So for that showroom they have rented the building, and उस building को उन्होंने rent पे लिया है, and they are paying the rent every month. But now they want to purchase this building, because rent देने में उनको ज़्यादा मतलब खर्चे होते हैं. अगर वो एक बार में पैसे दे करके परचेज कर लेते हैं, तो फिर उससे उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज मंथली पेमेंट बंद हो जाएगा और मंथली पेमेंट में ज़्यादा देना पड़ता है. अगर उनके पास एक बार में ज़्यादा पैसे आ जाए, तो दे आर प्लानिंग टू परचेज इट. ओके.
तो अभी वो रेंट पे लिए हुए हैं उस बिल्डिंग को. ओके, ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. So what happened ki the place where this showroom is situated, there are so many apartments have been constructed around the area. Okay, and now the people who are living in these apartments, they come in this showroom in order to purchase the रेडीमेड गारमेंट्स. तो जब ये अपार्टमेंट्स बन गए उनके आसपास के एरियाज में और इन अपार्टमेंट से लोग आने लगे खरीदने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स को, तो उनका बिजनेस जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग? द बिजनेस इज ग्रोइंग. इट मीन्स कि उनकी सेलिंग जो है वो बढ़ गई है ना. सो मेनी पीपल आर कमिंग टू परचेज द रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम देयर शोरूम. तो उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है. दे आर इन अ गुड पोजिशन. देयर बिजनेस इज इन अ गुड पोजिशन, एंड दैट इज वाई दे आर थिंकिंग ऑफ purchasing the building in which presently they have their शोरूम जो कि उन्होंने रेंट पे लिया हुआ है. अब वो प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए. क्यों प्लान कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सेलिंग अच्छी हो रही है. इफ their selling was not good, then they could not have thought of purchasing the showroom, है ना. तो this is the situation, and we have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. So उनकी business अच्छी चल रही है, and that is the reason they have purchased a car also. Okay, and they have booked a flat in an apartment which is in the nearby area. तो वही जो apartments नए नए बने हैं उनके आसपास के areas में, उन्हीं में उन्होंने एक apartment भी book कर दिया है. तो इस तरह से क्या हम देख रहे हैं, with the growth of the business, the quality of their life is also improving. उन्होंने इतने सारे परचेजिंग की, कार परचेज कर लिया, फ्लैट बुक कर लिया, एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू परचेज द बिल्डिंग ऑल्सो. तो इट इज बिकॉज their business is running in profit. So many people are coming to purchase the ready-made garments from their showroom because of the construction of apartments in the nearby area. और उनका जो showroom है that become the main showroom of that area. तो उनकी बिक्री जो है, उनकी selling काफ़ी अच्छी हो रही है, and they are in a profitable position. Okay. So, like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in various markets of the city. So, in this way, we see कि जैसे Vandana and Harpreet हैं, in the similar way, there are so many showrooms in the city. I told you yesterday also, in our city also we see such type of showrooms. बहुत सारे showrooms अब हमारे हर शहर में ये देखने के लिए मिलता है ना. So these shops may be small or large, and they sell different things. So ये जो shops होते हैं, ये small भी हो सकते हैं, large भी हो सकते हैं, and they sell different things. कहीं clothes बिक रहे हैं, कहीं grocery के items बिकते हैं, कहीं shoes के showroom होते हैं, footwear के showroom होते हैं. Okay, so they sell different things. Most business persons manage their own shops or business. वो खुद ही अपना मैनेज करते हैं. उन्होंने अपना शॉप, जो भी बिजनेस पर्सन है, जस्ट लाइक वंदना एंड हरप्रीत, दे आर द बिजनेस पर्सन. सो दे हैव ओपन देयर ओन शॉप, है ना. एंड अब वो क्या करते हैं, वो खुद ही उसको मैनेज करते हैं. उसको सारा कुछ, उसकी जो उसमें आना जाना देखना, एवरीथिंग इज मैनेज बाय द ओनर. मोस्टली यही होता है. बट इन सम केसेस ऐसा भी होता है जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उसने बहुत सारे शॉप्स खोल रखे हैं, बहुत सारे उसके बिजनेस हैं, तो वो खुद नहीं मैनेज करते हैं. वो किसी और को एम्प्लॉय में लगा करके उसको केवल सुपरवाइज करते हैं. बट मोस्टली यही होता है कि जो भी बिजनेस का ओनर होता है, वो खुद ही उसको मैनेज भी करता है. ठीक है. सो दे आर मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप्स और business. They are not employed by anyone. They are also just like vendors and hawkers. We were talking about vendors and hawkers in the previous class. तो हमने क्या देखा था? Vendors and hawkers are self-employed people.
no one has employed them for that job. They are the self-employed people, and they are poor people. They are not able to invest money in their business, so they are having the temporary type of shop, and they are selling very small things like स्नैक्स आइटम, फूड आइटम्स, देन जो हमारे डेली यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ, देन वेजिटेबल्स बेचते हैं, दे सेल फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. तो they are also self-employed persons, and these business persons like Vandana and Harpreet, they are also self-employed people. But what is the difference? The difference is in their capital which they are investing in their business, है ना. जो पैसे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है. जो वेंडर्स एंड हॉकर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ही खराब है. दे आर पुअर, दे डोंट हैव मनी. जो वो दिन भर कमाते हैं वही वो खाते हैं, है ना. हर दिन की जो उनकी वट एवर दे आर अर्निंग एवरी डे, दे आर स्पेंडिंग दैट मनी इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डेली नीड्स, देयर बेसिक नीड्स. तो उनके पास ऐसे पैसे जमा नहीं है कि वो किसी भी तरह से जाकर के अपना बहुत बड़ा शॉप खोल लें. बट दे आर ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना. और जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं लाइक वंदना एंड हरप्रीत, इनके पास पैसे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग मनी. तो उनको जो उससे जो आउटकम मिल रहा है वो भी जो है वो काफ़ी अच्छा है. दे आर ओइंग अ फ्लैट, दे हैव बुक्ड अ फ्लैट, दे आर ओइंग अ कार, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ planning of purchasing the building in which their showroom is there. So this is the difference. Okay. So they are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisor and helpers. So when someone is doing a business, then in that case they have to employ a number of people. Like जो इतना बड़ा showroom है वंदना and हरप्रीत का, 3-story showroom है. So Vandana and Harpreet will not be able to manage the whole showroom. In order to manage the showroom, they will need employees. तो फिर वो क्या करते हैं? They recruit the employees for their showroom. Whenever you go to a showroom in your city, you must be seeing the people who are there, who are the employees of the showroom. शोरूम के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमको दिखते हैं. सेल्समैन हम उनको कहते हैं, सेल्स गर्ल हम उनको कहते हैं, है ना. दे आर देयर एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस को ओन करता है उसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, और उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं. ओके, दीज आर परमानेंट शॉप्स. द शॉप्स आर परमानेंट. So we are just comparing, है ना. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? What are we doing? We are comparing the both the self-employed people, the vendors and hawkers. They are also self-employed people, and the business persons like Vandana and Harpreet, they are also self-employed people, but their condition is different, है ना. So first of all, we have seen कि they employ a number of other workers, but in the case of vendors and hawkers, they do not employ. They cannot employ. They don't need. उनको ज़रूरत भी नहीं होती है और वो एम्प्लॉय कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर अगर हम किसी को एम्प्लॉय रखेंगे तो उसको उन्हें पे करना पड़ेगा. They will have to pay the employee, and they don't have that much of money कि वो उसको पे कर सके. तो these are the differences. Then we see कि उनका जो शॉप होता है और जो भी वो पेमेंट पे लगा करके बैठते हैं या मूविंग हॉकर होते हैं, दैट इज टेम्पररी, है ना. बट यहाँ जिस शॉप की हम बात कर रहे हैं दैट इज परमानेंट. These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation, and these permanent shops they are there because they have taken license from the municipal corporation. जो भी हम बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, in order to do that business we need license. And who give this license का मतलब क्या हुआ? टाइप ऑफ, जैसे हमें परमिशन चाहिए होता है ना. लाइसेंस का मीनिंग समझ लो कि परमिशन. ओके, दिस लाइसेंस इट मीन्स परमिशन.
कहीं पर भी शॉप, परमानेंट शॉप जैसे ओपन कर लिया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, वी हैव टू take license. And from where we get this license? We get this license from म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, whatever it is. अगर हमारा बड़ा टाउन है तो फिर हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेना होगा, that is the urban administration, है ना. और अगर हमारा छोटा टाउन है तो फिर हमें म्यूनिसिपैलिटी से लेना होगा. ठीक है. तो this license is taken by the business persons, then only they can start their business, they can have that permanent shop. और यही प्रॉब्लम हमने देखा था, क्या था, जो हमारे वेंडर्स एंड हॉकर्स एंड पेवमेंट पे जो लोग टेम्पररी शॉप्स लगाते हैं, दे लैक सिक्योरिटी. उनको सिक्योरिटी नहीं होती. क्यों सिक्योरिटी नहीं होती? बिकॉज दे हैव नॉट taken any kind of license, they have not taken any kind of permission from the municipal corporation or municipality. Whatever urban administration is there, they have not taken license. और license मिलेगी भी नहीं उनको, क्योंकि they are using the pavement, that is the property of the government, है ना. तो वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसके लिए उनको लाइसेंस नहीं मिलेगी कि वो वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं. तो दैट इज वाई दे आर अनऑथराइज्ड, है ना. इसलिए हम कहते हैं कि उनका जो बिजनेस होता है उसको वी कॉल इट अनऑथराइज्ड, उसको अथॉरिटी नहीं होती है, दे डोंट हैव लाइसेंस, स्टिल दे आर डूइंग देयर. और इसी कारण उनको सिक्योरिटी नहीं होती है. कभी भी म्यूनिसिपैलिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आकर उनको वहाँ से हटा सकते हैं, पुलिस उनको हटा सकती है. और दैट इज़ वाई दे यूज टेम्पररी टाइप ऑफ शॉप, कि कभी भी अगर उनको हटाने के लिए कहा जाए तो दे कैन डिस्कार्ड द शॉप, है ना. तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द hawkers and vendors and the business persons. Both are self-employed. This is the similarity. And what is the difference? We are discussing the differences. Okay. So they have to take a license from the municipal corporation. The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. So weekly क्या होता है? Once in a week market is closed. Mostly हम देखते हैं कि markets कई जगह पे संडे को क्लोज्ड होते हैं, बट कई जगह पे मंडे को होता है. कोई भी दिन, एनी डे इट कैन बी, बट दिस डे विल बी डिसाइडेड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. वी कैन नॉट टेक, जब हम किसी मार्केट प्लेस में रह रहे हैं तो मार्केट प्लेस में जब हमारा शॉप है तो वी कैन नॉट टेक द डिसीजन ऑन आवर ओन कि हम मंडे को बंद करना चाहते हैं तो हम मंडे को बंद करेंगे. नहीं, मार्केट की जिस दिन की क्लोज को परमिशन मिली है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, on that day only the market will be closed. ठीक है. तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो डिसाइड करती है कि मार्केट किस दिन क्लोज होगी. ओके. सो फॉर एग्जांपल द शॉप्स इन अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेंसडे. वेंसडे को वो मार्केट बंद होता है. जहाँ पर हरप्रीत और वंदना की शॉप है, दैट शॉप इज क्लोज्ड ऑन वेंसडे. दिस मार्केट ऑल्सो हैज small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others. तो इसी मार्केट में other than this showroom there are other shops also, जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, like banks हैं, courier service है and others हैं. Okay, so this is the about the business persons. We have discussed it, and in this discussion the most important thing is similarity between the hawkers and vendors and the people who sell their items on the pavements, and the business persons who sell their things in the showroom. Both are self-employed, but their condition is very different. And now we have a new topic, and that is in the factory workshop area. अब यहाँ से मार्केट में वंदना हरप्रीत के शोरूम से अब ये दोनों कजन जो हैं, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. Okay, so now we will discuss this factory workshop area. I wanted to have zari work done on one of my dresses which I needed for a special occasion. Now one of the cousins is
wants जरी वर्क. जरी क्या होता है? इट्स अ गोल्डन थ्रेड, है ना. गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की जाती है. कुछ जब स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, लाइक मैरिज हो या फिर किसी भी तरह का कुछ स्पेशल हमारे घर में कुछ हो ओकेजन, तो उस ओकेजन पे हम स्पेशल ड्रेस पहनते हैं ना. एंड फॉर दैट ड्रेस सी वांट्स जरी वर्क, गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी उनको चाहिए. ठीक है. एंड नाउ my cousin said that she knew Nirmala, who works in a garment factory. Now they want this zari work to be done in their dress. In her one of the cousin जो है उसको अपने ड्रेस पे जरी वर्क चाहिए. एंड उसकी जो कजन सिस्टर है उसने बताया है कि जो एक निर्मला है जो कि फैक्ट्री वर्कशॉप में काम करती है, गारमेंट फैक्ट्री में. सी वर्क्स इन गारमेंट फैक्ट्री. ठीक है. एंड दिस निर्मला's नेबर डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. ये जो निर्मला जिसको कि उसकी कजन जानती है, वो निर्मला नहीं बट निर्मला की जो नेबर है, सी डज जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. सो what happened कि they are going to meet Nirmala. Okay. So we caught a bus and headed towards the factory area. In order to meet Nirmala, they are going to factory area by bus. The bus was really crowded. In the bus in which they were going to the factory area, that bus was crowded. So many people were there in the bus. At every stop, more and more people got on and hardly anyone seemed to get on. What was happening in the bus कि जहाँ पर भी रुक रही थी बस, so many people were coming in the bus. Okay, so many people were getting on the bus. और कोई नीचे नहीं उतर रहा था, हर कोई बस में चढ़ते जा रहे थे. ठीक है. So many people were getting on and no one was getting ऑफ. तो क्या होगा? आते जा रहे हैं लोग, कोई उतर रहा है ही नहीं. सो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द बस. सो बहुत ही क्राउडेड बस थी. एंड पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स. इट हैपेंस ना, जब कहीं पर भी बहुत क्राउडेड एरिया में हम होते हैं तो व्हाट वी डू, वी पुश ईच अदर. इधर इधर से पुश कर करके हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए स्पेस बनाते हैं. बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम सही से अपने लिए स्पेस नहीं मिल रही, तो हम हर तरफ से पुश करके अपने लिए एक स्पेस बनाते. तो दैट सेम थिंग वाज हैपनिंग इन द बस. ओके. सो माय cousin guided me to a corner so that we would not get squashed. Now they are fearing कि they will be squashed. दब जाएंगे वो दोनों तरफ से, कोई इधर से करेगा कोई उधर से करेगा. तो now they moved in the corner of the bus कि जब वो कॉर्नर में रहेंगी तो they will be safe. वहाँ पे उनको कोई स्क्वैश नहीं कर पाएगा, दबा नहीं पाएगा, है ना. तो both of them went in the corner of the bus. I wondered how people travel like this every day. They were feeling a lot of trouble. They are in traveling in that type of bus जिसमें कि इतनी crowd है, इतने सारे लोग इस तरह से स्क्वैश कर रहे हैं एक दूसरे को. तो ये तो दे वर मूविंग जस्ट फॉर अ डे. तो चलो ठीक है, एक दिन थोड़े समय की प्रॉब्लम, वी कैन टॉलरेट दैट प्रॉब्लम. बट नाउ दे आर थिंकिंग कि हाउ पीपल ट्रैवल इन दिस वे एवरी डे, बिकॉज the people who were on the bus, they were the workers who used to work in the factory area. So they daily come go to the factory area and come back from the factory area using the bus only. And daily जो उनका traveling होता है बस में, वो इसी तरह से होता है, in the similar way. वो एक दूसरे को स्क्वैश करते हुए ही फैक्ट्री एरिया पहुंचते हैं. एंड जब वापस का टाइम होता है तो भी दे फेस द सेम सिचुएशन. तो ये जो दोनों कज़न हैं, ये बहुत ही वंडर कर रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स के साथ वो हर दिन ट्रैवल कैसे कर पाते हैं.
So as the bus entered the factory area, people started getting off. When the bus entered the factory area, then the people started to get off, because सभी जो get on हुए थे bus पे, the people who got on the bus for that purpose only, because they all have to reach the factory area. तो जैसे ही factory area पहुंचते हैं, the workers started to get off. We also got off soon at a crossing. What a relief that was. So वो भी एक क्रॉसिंग जब आया फैक्ट्री एरिया के अंदर, तो वहाँ पे वो भी they also got down from the bus, and when they get down from the bus, it was a great relief for them, because फैक्ट्री जो बस थी वो इतनी क्राउडेड थी, वहाँ पर उनको काफ़ी suffocation, type of suffocation, they were lacking, जैसे एयर नहीं आ रही हो इस तरह की भी. we also feel the same situation. हम कई बार इस तरह के situations में होते हैं, इसको हम भी एक्सपीरियंस किए हैं, तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, और जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो जैसे लगता है कि जान बच गई, है ना. तो the same way these two people are also thinking. So we will continue our discussion regarding this factory workshop area in the next class.